All right. So now, raise your hands, raise your virtual hands, and one by one, we will give you a chance to ask your questions. Make the most of it, and switch on your cameras, please, unless and until it is it's something which is very unavoidable. Then fine. Otherwise, raise your hands and switch on your cameras. All right. Let's take Shubham Kumar. Good evening, sir. Good evening, Shubham. Sir, I am preparing for CDS and FCAT type entries, and I have recently exhausted my 10+2 entries. Sir, my question to you is, sir, we often heard that there are some kind of myths in GTO tasks. Like if you get a hard command task, then it is more likely that you got recommended. So, sir, is it a myth or is it actually a real thing? It's a myth. It's nothing like that. Okay, thank you, sir. By the time you reach command task, all of you please listen to this. By the time you've reached command task, 99% of your group effectiveness has been assessed. So the GTO has already made up his mind. The most important part of it were the first 4 tasks. I told you the sequence doesn't change. If you were to, pay attention when group testing officer is giving his briefing before the commencement of a task, all group testing officers across the country, whether it's Army board, Navy board, or Air Force board, they give the same briefing. That briefing is verbatim, it's by heart. हम अपने मुंह से वो बोलते हैं, वो हमें learn है. So that group testing officer has already made up his mind by the time you reach command task. It's already 19-20 का कुछ game है, या तो आप in हो या तो out हो. By then your group effectiveness has already been adjudged. So it's just some kind of a confirmation कि बहुत ज़्यादा hard task दिया है तो इसको recommend करने के बाद भी कौन से level में रखना है. Because finally at the end of the day we have to give you marks. Yes, and sir. Those marks are going to define your merit. तो yes, ultimately absolute level पे जो फाइनल मेरिट बनेगी तुम्हारा एब्सोल्यूट लेवल क्या है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के टर्म्स में, ग्रुप इफेक्टिवनेस के टर्म्स में. सो फॉरगेट अबाउट ऑल दीज मिथ्स. गेट योरसेल्फ आउट ऑफ द कोरा एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड टेलीग्राम यूनिवर्सिटी. योर जनरल डे टू डे लाइफ, व्हाटएवर यू फेस इन योर डे टू डे लाइफ is something which is going to define your group effectiveness. Understood, sir. Okay, next. Next we have Priya, and after that we'll have Tarundeep Singh. Priya. Sir, pardon me for joining late, but I have been previously 2 times recommended and got merit out for Indian Army. So as per my introspection, I was... Priya, can you switch on your camera, please? Yes, ma'am. Okay. Am I visible? Okay. So, sir, my question was that, like, as per the qualities which you mentioned, as per my analysis, I was able to like put it during the GTO task, but I have felt that during the individual obstacle, I was not able to complete all the obstacles. So was it a factor which have affected my result or my marks or something like that? Absolutely not. That's not the case. Individual obstacles is not a test of your physical fitness. Let me put it this way. Individual obstacles is a test whether you're physically unfit. We are not trying to find commandos in you. If we want to make you a commando, we have a separate training school for you. SSB is not a training institution. It's an assessment institution. It's an assessment board. So individual obstacles में आपने मुश्किल से 4-5 individual obstacles भी किए अच्छे से. Your body limb coordination is perfectly fine. Okay, you don't run flat foot, or there is not something grossly inappropriate in your body limb coordination. You're fit enough. You can take on the training. So your merit is affected because of the fact that this is specifically for all women entry, and all the ladies in this session. I want to tell you that the number of vacancies which are there available for women is very less, so the competition is very tough. By that I mean that people who will be making it to merit, because finally at the end of the day we are going to award you some marks. So there is something which is called as ranking and rating. Suppose I have 10 people in a group, I have to rank them. सबसे अच्छा कौन है, सबसे बुरा कौन है. And rate means I have to see
एब्सोल्यूट लेवल कितने लोग मीट कर रहे हैं. So in that, probably you are lower in the rank. That's why you've not made it to merit. It's not because of only the individual obstacles. That cannot be the reason. It is an integration. It is not a summation. Integration of your performance, not 1 plus 2 plus 3. It is integration of d2x by dy square, d1x by dy plus x, something like that, some differential equation. Any Next. suggestions? Okay. Thank you, sir. Thank you. You can. Yeah. Any suggestion for her? I think you could just clean up your pronunciation. I think the way you pronounce a few words, the way you speak English, I think there is some 19-20 का फर्क है वहाँ पे. Okay, so English matters a lot during the GTO. You tell me, if I were to post you as defense attaché to, let's say, United States in New York, are you gonna speak there in Hindi or Haryanvi or Rajasthani? So actually, I have a Spanish language as well, so that impacts my both of the accents. So yeah, I would definitely work upon it. Thank you. Yeah. So, next. All right. Yeah, Tarun, good morning, sir. Good morning, ma'am. No, good morning, Jain sir, Jain ma'am. So the reason is I'm not putting my camera on is that my camera is not working properly. So the thing is, in my last SSB, I got conference out, and in that SSB, 3 GDs were happened. 2 were international GDs, and 1 was the simple, simple GD. And after that, I don't know that why 3 GDs were happened. And there is one more question, like if I'm very good in the abstract task and my group cohesiveness is also good, but I'm not giving any ideas, like in Fattabali task, in command task and all the things. So still I'm having any chance of getting recommended from the GTO or not? How does it matter that, let's say, you have 3 GDs or 2 GDs or even 1 GD or let's say 4 GDs? How does it matter? Just tell me. We are just trying to find out some data. I told you every task has got some value, and based upon that particular values of the task, we are just trying to find out few observables जो हम देखना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर टास्क में. क्या फर्क पड़ जाता है 3 GD हो, 2 इंटरनेशनल टॉपिक हो, 1 नेशनल टॉपिक हो. कहाँ से कहीं से तो सीख के आए होंगे. ये कोरा वोरा में कहीं पे लिखा है कि GD1 में तो एनीवे GTO गिव्स यू एन ऑप्शन. एक इंटरनेशनल टॉपिक होगा, एक नेशनल टॉपिक होगा, और GD2 विल बी सम काइंड ऑफ अ सोशल टॉपिक, गर्ल चाइल्ड, abolition, some sati, this, infanticide, drugs, works, ऐसे कुछ होगा, something like that. पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने ये. While all of this is true, but it doesn't really matter. You should not really be focused on कितने GDs हुए, क्या GDs हैं. Now coming back to your second part of the question, how do you know what is your group cohesiveness, my dear friend? No, sir. Every time the experimental group of which you are a part, in every SSB, wherever you've gone, your group cohesiveness will change because the group has changed. The dynamics will change. So, अगर आप हर किसी से बहुत प्यार से भी बात कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा group cohesiveness बहुत अच्छा है. Group cohesiveness is not only towards, not only the emotional aspect of relating to each other, but also to the task, and then navigate the group towards attainment of the final goal. So I'm still not sure whether you're satisfied with my answer or not. Sir, the thing is, why I raised this question is because in my first SSB, when I get screened in, so when I was tying that knot and all, so GTO sir told in Kapurthala, like, who gives this idea? Please raise your hand who gives this idea. Then I collaboratively 3% told that we gave this idea. So I said that I was tying rope and supporting from the backside. So sir said, रस्सी के रहने दो यार. देखो तरुण, ऐसे नहीं होता है. सुनो मेरी बात. लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टार्ट लाइन पे खड़े होते हैं, वहां से स्ट्रक्चर को देखते हैं और देख करके बताते हैं, वहां से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि चेस्ट नंबर 1 पुट द फट्टा देयर, चेस्ट नंबर 2 टाई द रोप फ्रॉम बिहाइंड, ऐसे ऐसे करके कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं. तो लोग काम करने वाले जो होते हैं, दे डू नॉट गेट रिकमेंडेड, और कोई स्टार्ट लाइन पे खड़ा है ना जो ये आइडिया बोल रहा है अपने मुंह से, वो भी रिकमेंड हो जाता है. सो इट इज अबाउट व्हाट was your perspective, what perspective did you take as a part of the group. It's more about that perspective taking. It will keep changing. Don't
pick up one particular instant कि ऐसा हुआ था तो इसका मतलब ये है क्या, वैसा हुआ था तो उसका मतलब वो है क्या. No, what you have done, it has to be seen in the totality of the picture. This is called as Gestalt psychology. On this is a primary, or rather this is the cardinal principle on which group testing is based, Gestalt psychology. So I think I have finished my Yeah. answer. Thank you so much, sir. Next. Next. Sir, Jain sir. Jai Hind. Sir, absolute fresher in SSB. What suggestions will you give, sir? Wait, To follow wait. Whoever it is, there's like, I'm calling the name, and those who I'm calling, they will switch on their camera and they will ask the question. I will give you a Okay. chance. Raise your hand. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Padmavati, Hi, sir. Hi, ma'am. So I was once recommended for Navy. Like the one thing I didn't understand, or a question I have is, in lecture is it really important to choose a topic which is related to, Indian ballistic missiles or Indo-Pakistan relationship or whatsoever? In a, like they say, right, there is a myth. Think, Padmavati, that in 3 minutes, will I be able to gauge whatever knowledge you've carried for the rest 20, 21 years, 22 years of your life? It 3 won't minutes? be possible. Like What I do you just think? went with 3 the minutes. instant. Sir? What is this 3 minutes for? क्या है ये 3 minutes? क्या लगता है आपको? 3 minutes is to, like, in that pressure, we should be able to collect few points related to any one of the topic which is given to us and express it in a very good way or with a good Officer, you're presentation supposed to skill. lead your men. Sir? As an officer, you're supposed to lead your men. You're supposed to Yeah. talk to them. We Yeah. are just trying to understand whether you are able to articulate your thoughts and present them in front of people whom you've not interacted ever before in your life. That's exactly what we are trying to see, how extemper you are. Not only the English or the grammar or the pronunciation, but it is more about how beautifully you can weave your thoughts. You could just speak about my favorite actress, or rather my hobby, or my teacher. What do you think? Did I really come prepared for this session? Everything what is coming out of my mouth is extemper. Yeah. Does that make me a lesser of an officer? No, definitely no. Or does that make me lesser of an officer just because I've hung my boots and I've retired? No, sir, no. I was just your 3 wondering, like, minutes- the marks. So basically, your 3 minutes, your choice of the selection of the topic, it doesn't really matter that much till such time you're able to articulate your thoughts in a manner in which it shows that you are confident in putting your ideas and thoughts in front of people whom you've never met. Because at the end of the day, you're supposed to impart instructions to your men whom you do not know, but they will still follow your orders. Yeah. Understood? So your lecture is something, a test of that. See, entire SSB is so designed that you're subjected to situations. I said, no, it's not group test, it's group situational tasks. So your entire SSB is so designed that you are subjected to those situations which you are going to be facing in your day-to-day life while you're serving in the services. So services is not a job. Ki haan, meko army mein job lag gaya. It's not like that, no? You say that I've chosen a kind of life, a type of life, right? Yes. So situational tasks, situations, create those situations which you're going to face in your day-to-day life in the services. So the answer is your choice of topic doesn't really matter. The way you speak, the way you project your thoughts, that really matters. Again, remember this equilibrium. Manasa, vacha, karmana. So I call it the other way. Vaktan indriyam vihitihi samupe. Sir, can you repeat the last one? Vakta nindriyam vihitihi samupe. When your thoughts, mind, actions, speech coincide. Okay. Okay. Sir, any suggestions to, get merit in after your recommendation? What to do in a better way to get in merit? Be lively and as bubbly as you are right now throughout your group tasks. Yes, sir. Thank you. Yeah. Excuse me, sir. Wait, Sumit. This is being moderated by Sadhna ma'am. She will tell. Ma'am, your mic is off. yeah, who's that? You can just name yourself and I will give you a chance.
Okay, anyways, next, Bhagat Singh. Good Yeah, evening, Bhagat. ma'am. Good evening, sir. Good evening. First of all, thank you for giving us the opportunity and knowledge, sir. Sir, as a fresher to SSB, what suggestions will you give, sir, to implement in day-to-day life? तो इतना डरा हुआ क्यों है भगत? पहले तो ये बता. Why is there so much of anxiety, anxiousness on your face? Is somebody gonna eat you or something like that? No, no. देखो भगत, पढ़ो. Knowledge is power. Yes, sir. 2 महीने पहले के सारे मैगजीन्स निकालो अच्छे से. Frontline, India Today Group, any good magazine that you follow. Print media. थोड़ा सा keep yourself away out of Facebook, Instagram, WhatsApp University, Telegram University, Quora, Indian Army Brat, SSB, Crack.com, ये सब से थोड़ा दूर चलेगा और पढ़ो. What do you have to read? You have to read editorial columns of the newspapers, an epiphany of ideas, a speaking tree. Has anybody heard this? Epiphany of ideas, speaking tree, page number 15, 16 Times of India. Yes, sir. Read Sir, these yes. editorial columns. This is going to help you in SSB. I'm telling you. How matters more than what in SSB? Yes. Thank you, sir. Next. Yeah. Thank you, sir. Next. Next, we have Priyanka. Do you want to ask any question? Priyanka Yadav. Jain, sir. Hello, sir. Jain. Hi, good evening, Priyanka. Good evening, sir. Good evening. Sir, I have my CSP on 1st of September, Bangalore board, and I am going through NCC special entry. So, sir, it was really, and I am conference out last time. So, sir, can you tell me what should I, can just suggest me something, how can I perform better there? Like you were talking about group effectiveness. So, how can I improve that and How can one improve group effectiveness? Number of questions, number of candidates have asked this question in chat also. Group effectiveness. How to improve? Okay. मेरे मुर्गी की एक टांग ये कभी नहीं करना. This is my first and the last, you know. Effectively, if I were to give you an example, let's say 20 minutes, एक GD का topic 20 मिनट के लिए चलता है, 20-25 मिनट. और suppose let's say group का size अगर 10 है, तो 10 लोग एक बार अगर कुछ चीज अगर आप बोलने की कोशिश करोगे तो you will take about 30 seconds, 30 to 45 seconds. तो on an average ले लेते हैं कि 90 seconds, that means 1.5 मिनट. तो मतलब 1.5 मिनट में एक इंसान 2 बार बोल सकता है. तो 20-21 मिनट में कितना हुआ? 7 chances, 8 chances that one person will get. Max to max 10 बार. 10 बार तो बहुत ज्यादा हो गया. 6 to 7 chances is one person who gets to speak in a group discussion. तो वो लड़ाई में नहीं निकालना चाहिए. Let me speak, chest number 3, shut up, और चिल्ला के बोल रहे हो जोर से कि अरे मेरा सुन लो. It doesn't work that way. Just imagine it is going to be 6-7 chances for you to present your thoughts in that group discussion. You would not want to miss those 6 to 7 chances. So when you speak to the point, with elan, with confidence, with some substance. Do not just repeat what other person has spoken. Bring some new idea to the table. That's where knowledge is power. That's where I tell all my students, padho, knowledge gather karo. Kyunki jab bologe, so you are not going to fire, shoot shit with confidence. You're not going to fire in the air. You have to speak to the point, and it has to have weight and substance when you talk. So your entire thing depends on the knowledge base that you're carrying. Now, this knowledge base will be applicable not only your GD, GP, but it will be applicable everywhere. EGT, you may face some another kind of a task. How does it matter? It doesn't really matter. Okay. Yes, sir. Thank you so half much. the half the assessment is finished after your group obstacle base. उसके बाद में तो बस खाली confirmations होती है. Yes. What you do in first 4 tasks decides your fate. Okay. Yes, sir. Thank you so much.
Next. Sumit Singh. Who is this guy? Next, we have Rishi Yadav. Rishi Yadav. Yeah. Am I audible? Yeah, Rishi, tell me. Yes, Rishi, you are. Jain sir, Jain ma'am. Jai Hind. So I'm a repeater, and last time I got a conference out. While I was sitting outside the conference hall, I was able to overheard the conversation. So my question are two. There are two questions. The first is that the GTO was, he was recommending me, and why I'm able to say this because due to Corona they were using mics and it was pretty loud, and he was saying that we want this candidate in the academy. But nevertheless, the psychologist was saying no. I mean, there was some kind of commotions. I wasn't able to hear much of it. But my question is the value of psychologist more than the GTO? And the second question is that Sorry, value of psychologist is more than a GTO. Yes, No, the other way. Yeah. And next. And the next question is, you have done, psychologist test, and you have gone through the procedure. So I would like to ask you that, do we need to have, do we have to be a raw person when we are, dealing with situations? Raw person in the sense that our approach, I'm a metropolitan. I live in a metropolitan city, so my approach will be more modern. Whereas a village guy will be having more raw type of, his approach will be more raw. So in every task we have said that you don't have phone, you don't have any kind of technology and things like that. So do we have to have a raw type of approach, like you are going in the night and you encounter some goons in front of you? So my approach will be like that. It doesn't matter if they are goons. First of all, you need to talk to them, or handle the situation calmly rather than having a fight or a fist fight. So this is my question, that you need to be raw, you need to be loud, you need to be kind of person who showed deterrence everywhere, or you need to be a calm person, because I'm looking at you and you seems to be a calm person. Every officer seems to be a calm person. So is this a myth, or is this the reality that you need to be a kind of person that iron fist in a velvet glove? भगवद गीता में if I'm not wrong 12वां अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने ये बोला है कि okay, there is no religious fanaticism here, but I'm just telling you कि if you were to prove that you were powerful, तो तलवार निकाल के जो सामने वाला तुम्हारा एनिमी है उसके गर्दन पे ले जाके तलवार रखो और बोलो कि अब नहीं काट रहा हूं, छोड़ रहा हूं. That shows that you are powerful, not a fist fight. Okay, so this is the approach. Just try to understand what I'm trying to tell you, that whatever situation reaction test that you're subjected to, there is no differentiation between somebody who comes from a metropolitan area or somebody who comes from a from let's say a village or let's say small town. You said, let's say आप ही का example ले लेते हैं. आपने बोला कि you are going through night कहीं से and सामने goons आ गए, तो आपने बोला कि you will handle the situation. मैं बोलूँगा कि I was with a group of 10 people who were returning, the group was returning from, let's say, some restaurant. And then all 10 of us, we were able to overpower the goons in a manner in which we were able to settle down the matter amicably. So it is about the perspective taking. What do you think? I come from Bangalore or Bombay? No, I come from a very small town. भारत के नक्शे पे देखा भी नहीं होगा किसी ने, यवतमाल नाम की जगह, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, नियर नागपुर. Doesn't mean that I don't understand if I were to get into a fist fight with a goon in Bangalore, let's say, or maybe I'm with my group, my friend circle, and then we happen to encounter. So what mattered in my answer was the first phrase that I used in my first sentence. I was with my friends, a group of 10 people who were returning from a restaurant on the weekend. And we were able to handle the situation amicably. So it is the perspective taking. So the question was not about कि तुम village से हो तो तुम rugged इंसान और लड़ाई कर लोगे. No, it was about the perspective taking.
Okay. Excuse me, sir. Hello. My first question, sir. Yeah, That okay. Every assessor, irrespective of his rank or whatever position he holds, GTO, psych, or the interviewing officer, every assessor has a veto power. You understand what a veto power is? yes, sir. Yeah, so anybody who says no and the other person says yes, psychologist, GTO, or IO, anybody who says no, the candidate has to be dropped. So Okay. it's not that the psychologist is more powerful than GTO. ऐसा नहीं. Everybody has got an equal power, 33.3333. Okay. Okay. Thank you, sir. Okay. Next. Excuse me, sir. Hello. I have a doubt, sir. Hello. Wait. Hello. Sadhna ma'am is moderating this. All of you, please wait. Hello, Sadhna ma'am, I would like to add a point. Can I? Yes, please. Yes, please. First of all, okay. Jai Hind, sir. Jai Hind, ma'am. And Who's sir, that? like, Who's that? my name is Vipul Sharma. And actually, just sir, बात बता रहे हो, एकदम सही बात बता रहे हैं. Like, I just want to add few points, sir, if sir allow. Can I? Go ahead. Go ahead. Yeah. सर एग्जैक्टली सर आपने सही बात बोली है. बहुत बार जैसे जो सिचुएशन डिस्कस की थी कि अगर 10 लोग सामने आते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोग अपने आप को ऐसी जगह पे रख लेते हैं यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती. सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम लोग सोचते नहीं कि वो जगह कौन सी होती है. हमको सोचना चाहिए कि ऑब्वियसली वो जगह कौन सी है, हम किनके साथ हैं. सर एकदम सही बात बता रहे हैं. हमारा काम ही ये होता है कि रिसोर्सेज ढूंढना, एंड हर एक SRT की डिमांड होती है क्वालिटी. और अगर मेरे ख्याल से सारे कैंडिडेट्स अगर एक डिमांड पूरी कर दे, ऑब्वियसली वो डिमांड पूरी होनी चाहिए साथ में प्रैक्टिकल भी, तो मेरे ख्याल से जो सारी SRTs है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी. Okay, thanks. Next. Excuse me, sir. I have a doubt. Can I ask? Wait. Who's that? Name yourself. My name is Sumit Singh. Sumit. Okay. All right. Yeah, go ahead. Sumit. Ask your question. Sir, can I ask doubt in Hindi, sir? Yes, यार please. किसी में भी बात कर लो. राष्ट्रभाषा में वार्तालाप करना आता है हमको. सर मैं ये बोला था आपसे, जैसे सर मान लो कि हम कुछ टॉपिक लर्न करके जाते हैं GD के लिए, जैसे मान लो इंडो पाक रिलेशन, इंडो चाइना रिलेशन या कुछ और टॉपिक. सर अगर सर मान लो सर टॉपिक तो सर बहुत सारे होते हैं, अगर मान लो सर SSB में कोई अलग टॉपिक आ गया तो? इसीलिए तो बोल रहा हूँ पिछले 2 महीने की सारी मैगजीन्स निकालो, एडिटोरियल कॉलम्स पढ़ो. इसीलिए तो बोल रहा हूँ सुमित, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम्हारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, अगर ये तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें फौजी अधिकारी बनाऊंगा क्यों? गिव मी वन गुड रीजन कि मैं तुमको क्यों तुम्हारे कंधे पे अशोक स्तंभ लगाऊं, तुम्हारे माथे पे अशोक स्तंभ क्यों लगाऊं मैं, अगर तुम्हारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है ये तुम्हें पता नहीं है तो. इसीलिए द फर्स्ट की टू सक्सेस इज पढ़ो, नॉलेज इज पावर. पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, फेसबुक, इंस्टाग्राम छोड़ दो. डोंट बी ऑन सोशल मीडिया फॉर नो राइम एंड रीजन. डोंट वेस्ट योर टाइम. सोशल मीडिया को यूज करने के दूसरे बहुत पॉजिटिव तरीके भी है. नेगेटिव तरीके पे मत जाओ कि आई लाइक टू पुट एवरी पोस्ट. हर एक पोस्ट जरूरी नहीं होता है. ओके यस सर. तो आपके अकॉर्डिंग सर मतलब इन सब की जानकारी के लिए सर कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर? पढ़ो यार, नैपिली, एडिटोरियल्स. अभी तो बताया मैंने आपको कि यू हैव टू रीड print media, magazines, Frontline. How many of you know Reader's Digest? How many of you have ever read even one article or one column of Reader's Digest? सुना है कभी Reader's Digest का नाम सुमित सिंह आपने? नहीं सर. तो फिर ये पढ़ो ना. इंडो चाइना रिलेशंस क्या पढ़ रहे हो? इंडो चाइना रिलेशंस विल बी अ सबसेट ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग. इंडो चाइना रिलेशन समझने के लिए यू हैव टू गो बैक सम 200 years ago, 300 years ago. किसी ने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 पन्ने का प्रिंट आउट निकाल के आपको दे दिया है ना कि ये है GD टॉपिक, इसको पढ़ लो. दैट्स द रॉन्ग वे, रॉन्ग अप्रोच टू ग्रुप टेस्टिंग और रादर SSB in total. This is a myth. SSB doesn't work like that. अभी बताया मैंने, GD में 6 या 7 मौकों से ज्यादा मौके नहीं मिलेंगे बोलने के 20 मिनट में. ओके
So I think you need to broaden your horizon. रेस की घोड़े की तरह सोचना बंद करो, एक मैदान में खुला आजाद घोड़ा जैसे दौड़ता है ना, उस तरीके से सोचना स्टार्ट करो. Okay, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Next. Next is Gayatri. Hello, ma'am. Hello, sir. Good evening. Sir, as I'm fresher, so I'm get very confused in GP. So, sir, any suggestions to solve the GP? And in मतलब exact way में कैसे solve करना है, मैं confuse हो जाती हूँ थोड़ा. और PPDT में assessors मतलब क्या quality scene करते हैं हमें? Okay. So GP को कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं होता. GP वो चीज है जो आपकी जिंदगी में डेली लाइफ में आप कभी भी फेस कर सकते हो. ठीक है. It is something like क्योंकि आप अपने डेली लाइफ सिचुएशन में कुछ ना कुछ कम ज्यादा कहीं ना कहीं उसको एनकाउंटर करने वाले हो. एंड ऑन अ सीरियस नोट, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, जो पहले स्टैंड मॉडल बना के दिखाया जाता था SSB में कुछ साल पहले, लगभग 20-25 साल पहले, 30 साल पहले. एंड उसमें दिखाते थे कि क्या करोगे. सो GP it's something very very practical in nature. कि तुम्हारे सामने अगर कोई मर रहा है तो पहले उसको बचाओगे. तुम्हारे अगर कहीं चोरी चकारी हो रही, डकैती हो रही है, तो लोगों को इकट्ठा करके बोलोगे ना. तुम्हारे घर पे अगर कोई चोर आता है तो चिल्लाओगे नहीं, अरे बचाओ बचाओ चोर है. लोगों को इकट्ठा करोगे. आग लग गई है कहीं पे तो बोलोगे ना, चिल्लाओगे, अरे आग लग गई है, पानी लेके आओ, पानी फेंको, इलेक्ट्रिसिटी बंद करो, एक्सटिंग्विशर लाओ, CO2 दिस दैट. ये वो बिल्डिंग में आग लग जाती है तो. हाँ. रेलवे की पटरी को कुछ हो रहा है, ट्रेन में कुछ हो रहा है, या बस को कुछ हो रहा है ना, राज्य परिवहन निगम की बसों को कुछ हो रहा है. अरे उन लोगों को बताओगे ना जो ये अथॉरिटीज है. खुद क्या कर लोगे? और खुद को जो करना है वो सीन ऑफ एक्शन पे छोटा मोटा जो तुम कुछ कर सकते हो, जब तक अथॉरिटीज पहुंचे तब तक कुछ करोगे. स्कूल में अगर 10 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या तुम्हारे हॉस्टल में अगर 10-20 लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो पहले उन लोगों को छुड़ाओगे, बाद में वार्डन को तो बताओगे ना, चीफ वार्डन को. दिस इज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज. सर वो जो उसमें मेंशन होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कि आर्मी कैंप वगैरह है, तो मैंने ऐसे सुना था कि उसका यूज नहीं किया जाता सर, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है. ये मिथ पहले अपने मन से निकालो कि किसमें क्या यूज किया जाता है, क्या यूज नहीं किया जाता. नहीं सर, एक प्रॉब्लम. All 57 participants, excluding me and Sadhna ma'am, let's say 55. All participants, please understand this. Get yourself out of this Quora University, WhatsApp, Telegram, SSB crack. इन सब से बाहर निकलो पहले. I have seen more than 6,000 candidates appearing for SSB. Pilots, observers, women entry, JAG, lawyers, SSC Tech, Permanent Commission, Army, PCSL. I don't know what all entries I have seen. 6,000 से ज्यादा बच्चे देखे मैंने. इन सब चीजों के बाहर निकलो. ओके सर. ऐसा होता है जीपी में ना, वो वैसे कर देते हैं, फिर 3 प्रॉब्लम्स होती है, फिर ना वो ग्रास्प देखना होता है, अटेंशन देखना होता है, टाइम प्लान क्या है, तुम्हारा सॉल्यूशन क्या है. दिस इज नॉट द वे. पुट कॉमन सेंस लगाओ, खुद को अपने आप को सिचुएशन में उतारने की कोशिश करो. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पर्सपेक्टिव टेकिंग. SSB is a test of your perspective taking. Okay sir. And sir, another question is what qualities try to work on your English and your pronunciation. That's sir, most important. Okay sir, I'm working on that. Sir, like PPDT, what qualities they shown us? जो स्टिमुलस दिखाया गया है, पिक्चर को स्टिमुलस बोलते हैं. जो सिचुएशन पिक्चर में दिखाई गई है, आपने उसी से मिलती जुलती कोई स्टोरी लिखी है, या फिर ग्रॉसली इनएडिक्वेट जो उस पिक्चर से रिलेट ही नहीं करता है. पिक्चर में अगर कुछ पहाड़ दिख रहा है या स्मोक दिख रहा है, और अगर आप वहां पे लिख रहे हो कि ग्रुप ऑफ पीपल, और मैंने SSB में हार्डवर्क किया और मैं SSB में सिलेक्ट हो गई हूँ और अभी मैं ऑफिसर बन गई हूँ, तो वो पहाड़ दिख रहा है, कुछ स्मोक दिख रहा है, और यहाँ पे आप कुछ SSB के बारे में लिख रहे हो, तो ये मिसमैच है. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपका स्टिमुलस के साथ कुछ मैच होना चाहिए, और उसमें कुछ कंटेंट होना चाहिए. द कंटेंट हैज टू हैव सम वेटेज. थिंक ब्रॉड. Yes sir, continue. Think broad. Try to look at the things like eagle's eye. Okay sir, and actions, मतलब actions डालना important होता है. Yeah, obviously you have something like कुछ ना कुछ चल रहा है, फिर कुछ हो रहा है, और आगे कुछ होने वाला है, right? कुछ रिजल्ट होगा उसका. Yeah.
So that is the test of perspective taking. आपने क्या perspective लिया उस situation में, और जब आपने अपने आप को किसी के शूज में ढाल दिया, तो अब आप क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है आपके साथ उसमें? Okay. किताब में लिख के नहीं दिया जा सकता, पेपर पे लिख के नहीं दिया जा सकता. अगर आप कल आर्मी ऑफिसर बन गए और कल कॉन्वॉय कमांडर बन गए, एंड यू हैव टू टेक योर कॉन्वॉय फ्रॉम श्रीनगर टू द्रास, 900 लोगों की बटालियन, 130 ट्रक, 6 जिप्सीज और 1 ऑफिसर, 15-20 जेसीओस, 4 एनसीओ, 30-50 एनसीओज और 800 ओआरस को लेकर के जाना है. और बत्रा टॉप के पहले 10 किलोमीटर पहले अगर शेलिंग होगी, तो किसी पेपर पे लिख के नहीं दिया जा सकता कि शेलिंग होगी तो एक्शन नंबर 1 ये होगा, एक्शन नंबर 2 वो होगा. Okay, Yes, sir. that is a Yeah. perspective in which now you are facing that practical situation of varying complexity. Now what will you do? Tools है, resources है, लेकिन उसको प्लान और ऑर्गेनाइज करके उस शेलिंग में से अपनी कॉन्वॉय को इंसिडेंट फ्री वहां से बाहर कैसे निकालोगे? पेपर पे लिख के तो नहीं दिया जा सकता. कोई बिजनेस स्कूल नहीं है, IIM, ISB, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एंड स्टैनफोर्ड तो नहीं है. कोई केस स्टडी है कि उस वाले कॉन्वॉय में ऐसे हुआ था, उस वाले कॉन्वॉय मूवमेंट में ऐसे हुआ था, तो ये केस स्टडीज है, इसको लर्न कर लो और बाद में ऐसे अप्लाई कर देना. ऐसा तो नहीं है ना. नहीं. सिचुएशंस विल कीप चेंजिंग इन लाइफ, पर तुम स्टेबल होने चाहिए. That is Yes, the sir. mark of an Indian Armed Forces officer. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much. Okay, chalo, next. Next, we have Ronak Raj Singh. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, I'm a fresher and my doubt is with regards to TES, SSC Tech, TGC and NCC entry. Sir, I have seen many of my friends who have got screened in UPSC entries, FCAT entries, but they are not able to, even recommended cadets, they are not able to kind of get screened in these 3 entries. So I know the rush is like a big strength, sir, but how can we in that kind of group, how can we project our personality in your the selection in the board, whether you qualify stage 1 or stage 2, it depends on your performance in that particular moment or in that particular time or that particular board, that assessment, that SSB. So if you have not performed, we say that in the opening address when you reach on day 1 or D-1, we say that even previously recommended candidates have to perform, because it is the test of your performance. What you have done, that you will be assessed on that particular day. So it is your day. अगर उस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया द वे यू वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर टास्क, तो पहले तुम रिकमेंड भी हुए हो सकते हो, लेकिन तुम स्क्रीन आउट हो जाओगे. दैट्स नंबर 1. एंड आई थिंक दैट एक्चुअली आंसर्स योर अदर क्वेश्चंस आल्सो. यू हैव टू परफॉर्म. इट कैन नॉट बी लाइक कि मैंने पहले 95% लेके आया था 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में, तो अभी 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में मेरा फिर से 95 आ जाएगा बिना कुछ लिखे, बिना कुछ मेहनत किए. ऐसा तो हो नहीं सकता. और रादर इवन इफ यू वर टू सिट फॉर द सेम एग्जाम अगेन एंड अगेन, if you are not able to consistently perform, then you will not have the same score. So consistency is one of the principles of assessment at SSBs and AFSB. You have to be consistent. Okay, so I think that effectively answers both your questions. Yes, sir. Sir, and sir, the thing was the consistency part is okay, sir, but like in that around 400 cadets or 300 cadets who come there, Your hardly selection at the SSB doesn't depend on the kind of strength that is reporting. That's number 1. Number 2 is it actually doesn't depend on the availability of assessors. ये भी एक myth है कि यार 400 लोग आ गए और बोर्ड में 4-5 ही GTOs है तो 40-50 से ज्यादा ये लोग रखेंगे नहीं. ऐसा नहीं है. रखना है तो 400 में से 200 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं. डिपेंड ये है कि वो मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल का जो बार है ना, वो क्रॉस होना चाहिए. असेसमेंट इज फेयर एंड स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट. सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वी आर बाउंड बाय एनी फिक्स परसेंटेजेस. नो, नथिंग विल गिव अस अ ग्रेटर प्लेजर देन टू सी ऑल ऑफ यू इन यूनिफॉर्म. वी आर ट्राइंग टू फाइंड दैट क्वालिटी मटेरियल. So we have given you an opportunity, but the point is that opportunity lasts for a particular duration of time. Utne duration mein if you are not able to present yourself, then you will be kicked out. As simple as that. Time is at premium in SSB. Oh yes, sir. Thank you so much, sir. Yeah. All right. Next we have Abhishek. We need to go a little fast now. Yeah, so we are already stretching, and just because many of you joined late,
we are stretching, and I'm taking that liberty with Nikhil, and he's kind enough to stretch that much. So another maybe 2 questions after Abhishek, and that's it. We are going to end. Yes. Yeah, Abhishek, tell me. Abhishek, go ahead with your question. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Am I audible? Yeah, you are audible. Sir, my question is that in GP, like if we made our priorities, we made our priorities. So when we write on the paper, sometimes we think that if we write in the lines form, so it will take how much देखो time? यार अभिषेक सुनो, जीपी में ये सब लिखना बंद करो कि ग्रास्प ये था, एम ये था, प्रायोरिटीज ये थी, ये रिसोर्सेज थे, ये हिडन है, ये सब सीख के आए होंगे तुम। कितनी बार एसएसबी दे रखी है तुमने? 3 times. 3 टाइम्स। तो ये कहीं ना कहीं से सीख के आए होगे ना, तभी तो ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हो मेरे सामने। हाँ सर, वही पूछना था कि भूल जाओ ये सब चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता। This is not how you approach GP. No. एक पैराग्राफ भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट किस तरीके से तुमने सॉल्यूशन को व्यू किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, दैट मैटर्स मोर। एंड जो लिखा है वो तो बाद में जज होगा, जो बोल रहे हो जीपीए में वो पहले जज होगा, क्योंकि पहले जीटीओ देखता है तुमको बात करते हुए। तो टू द पॉइंट अगर तुम बोलोगे विथ दैट इलान एंड कॉन्फिडेंस, जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो, इट इज शोइंग दैट यू आर शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस राइट नाउ। Anxiety, I can see some anxiety on your face. This is what GTOs are famous for. So smile. Okay. Secondly, like Priyanka said, you said that in CDP get 6 and 7 chances. So sometimes we have to speak something, but some other candidates in that point also. So at that situation, what can we do? कभी कॉलेज के हॉस्टल में रहे हो? डे स्कॉलर थे? तो जिस कॉलेज में पढ़े हो वहाँ कभी किसी कैंटीन में जाके बैठे हो? Yes, sir. दोस्ती यारी की है कभी लोगों के साथ में? Yes, sir. तो कुछ अलग अलग टाइप के लोग आते हैं ना वहाँ पे, चल मैगी खाने चलते हैं, चल मैगी अंडा खाने चलते हैं, पराठा खाने चलते हैं, आलू पराठा, राइट, दही के साथ। तो वहाँ पे कुछ ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं, तो उन लोगों के साथ कैसे डील करते हो? बातचीत कर लेते हैं या फिर जिसको नहीं जाना तो यही करना है एसएसबी में भी, एग्जैक्टली यही करना है। इसको बोलते हैं टैक्ट, स्किलफुल मैनेजमेंट ऑफ द फीलिंग्स ऑफ द पीपल यू डील विथ। टैक्ट ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ओएल की। सीधी सीधी बात है, एक ग्रुप में अपनी बात को, अपनी पॉइंट को कन्वे कर देना बिना किसी दूसरे ग्रुप मेंबर को अपना दुश्मन बनाए, उसको बोलते हैं टैक्ट, स्मार्टनेस, स्ट्रीट स्मार्टनेस। ठीक है, बिकॉज एज अ मरीन कमांडो इन द इंडियन नेवी, इफ आई वर टू पोस्ट यू इन JNK, वहाँ पे फेरन पहन के घूमोगे, वर्दी पहन नहीं सकते। टेररिस्ट के साथ में मिले हुए कोई लोकलाइट्स होंगे या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन लोकल इज ऑपरेटिंग देयर, नो, गोली मार देगा। So you need to have that tact. Marcos, Marine Commandos, the few, the fearless. Okay. So anyway, I think I have aptly answered your doubt. Yes, sir. Next. Next we have Sanju. Hi, sir. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Sir, actually, I have a doubt. I have SSB on 4th August PSB I have for Coast Guard. Could you please suggest me some tips to crack the OIR test and the PPDT? What are you? Are you an engineer? Yes. You are an engineer? Yep, I am an engineer. What exam did you write before engineering college? I'm a fresher now. I'm Where just did you do your engineering, my dear friend? I have completed from Vishweshwara Technology, Belgavi. Okay. Karnataka. Yeah, Karnataka. So how did you get admissions there? What exam did you write? CET. CET. वो CET में कौन से papers थे? Physics, mathematics, biology, and chemistry. बस that's it. That's it, sir. और कोई टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं था? No, sir, no. JEE में आजकल होता है क्या कोई टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? No, sir. Actually, PCMB they will take. Okay. So what I'm getting at is,
OIR test is a test of how you perceive the relations. Okay. Like suppose एक arrow है, ऊपर point कर रहा है, फिर next वाले figure में it is pointing towards right, then third figure में it is pointing down, तो fourth figure में it will point towards left because it is moving clockwise. Yep. I remember writing some AIEEE exam about 16-17 years ago. तो वो AIEEE एग्जाम में पहले ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में यूज्ड टू हैव दैट, एक इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ करता था उस टाइम पे। IIT JEE का प्रीलिम्स और मेंस हुआ करता था, अभी की तरह नहीं है दैट इट यूज्ड टू बी डिफरेंट, सब्जेक्टिव पेपर होता था JEE का। सो वी यूज्ड टू हैव दोज इंटेलिजेंस टेस्ट्स जिसमें all these kinds of relations you're supposed to perceive. So OIR test is nothing but that test of perceiving relationships in the figures. You will get it on Google. There are so many tests available. Test of intelligence करके लिखना, you will get it. So basic Hardly- test. Basic intelligence test of test. intelligence. That's it. Thank you, sir. Thank you. Sir, any suggestion for PPDT? Coast Guard. Stick to the stimulus that has been given to you and be tactful. When you do the group discussion, try to collate all the ideas, not मेरी मुर्गी की एक टांग. Next. Thank you, sir. Thank you so much. Next. All right, we have one last question from who should I take? Prabhat. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, Yeah. you are. Sir, I just wanted to ask 2-3 questions. First is, sir, how to do an introspection after coming from the SSP? I was convinced out. Second is, sir, in my GPE, my group was discussing some absurd, I can say, views or methods of discussing the response. And so should I stick with the group or should I give them, because I gave some responses, but they were large in group. So I agreed to them that, okay, we can do this by your method only. And sir, third one is that in group discussion, we are given 3 leads. So we have to stick with 1 lead or we can give points to the other 2 leads also. Okay. You can speak on any lead that you feel like. It doesn't matter. What you speak more, it matters. Yes, at times, but I'm telling you how you speak matters more than what you speak. Now, number 2 is your group planning exercise. The group was discussing some absurd idea. That absurdity of the idea is with your perspective. But with others, it may not be absurd. But if it is really absurd, let's say absolutely also, if I see कि हाँ यार बहुत ही absurd idea discuss कर रहा था group, तो अभी इनकी ये बेवकूफ़ी को कैसे मैं रोकूं? यार तुम्हारे कॉलेज में तुम्हारा जो इंजीनियरिंग तुम्हारे डिपार्टमेंट में जो तुम्हारा ग्रुप होगा ना 5-6 लोगों का, 7 लोगों का, 8 लोगों का, उसमें से 4-5 लोग अगर कोई बेवकूफ़ी करते किसी गलत रास्ते पे जाते हो तो उनको कान पकड़ के खींच के वापस लाते हो ना सही रास्ते पे। लाते कैसे हो? वही सर उन्हें यस रीजंस देते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे हो सकता है। तो वो बोलने का टैक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बोलोगे तो तुम उसके साथ में क्लैश करोगे पर लड़ाई तो नहीं करोगे ना। दोस्त है आखिरी में तुम्हारा, मेरा यार है, बराबर? यस क्या वो दैट सॉन्ग इज देयर नो, मेरा यार है तू, तेरा यार हूं मैं। हाँ, समथिंग लाइक दैट। सो तेरा यार हूं मैं, राइट? यस सर। So group cohesiveness, ability to emotionally relate to each other and to the task, and the attainment of the task, GC, group effectiveness ka. How to do introspection? My dear friend, you are the best person in the world to introspect. Nobody can tell you that. Or if you were to really want to do some kind of an introspection, you have to sit with me, somebody like me, and tell ये time पे ये हुआ था, वो time पे वो हुआ था. But 99% I'm giving you guarantee that you will not be able to recreate the entire situation what you faced for those 5 days. Okay? Yes sir, the exact You will be situation. able to understand what happened with him at the end of the conference. उसको sociometry बोलते हैं. Okay. Yes sir, in GP if the GTO sir asked, okay, any suggestion, and he deliberately asked, okay, is there any suggestion required? So should I give or should I stick with the common conclusion that we have What made? suggestion did he ask for, my dear friend? Sir, for one problem, see, there was private hospital in city, but in the nearby village we can have community health center. So I advised them that the person is injured, so after providing first aid we can get him to the village because it will take less time and his life will be saved. So they were advising to take lift and then go to in a
city hospital, it will take more time. So he was the GT was asking deliberately यार एक बात that बता, okay एक सेकंड, कहाँ पे रहता है तू? कहाँ घर है तेरा? sir, वाराणसी। वाराणसी तो बहुत बड़ा शहर है, माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो। यस सर। हाँ, अभी तो स्मार्ट सिटी बनने वाला है, एम्स भी आ रहा है ना वहाँ पे। और सर वहाँ वो भी BHU है, BHU पहले ही है सर, अब एम्स नहीं रखा जाएगा वहाँ पे, BHU को ही उसका दर्जा। बहुत ही बढ़िया। अभी सुनो मेरी बात, वाराणसी से जरा 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं किसी गांव में, और वहां पे सपोज तुम मलखाम खेल रहे थे। मलखाम देखा है तुमने, क्या होता है? सर वो खंबा वाला। हाँ, खंबा वाला। यस सर। और वो मलखाम करते करते अगर तुम अपने सर पे गिर गए, और मलखाम जनरली लाल मिट्टी के बेस में किया जाता है। यस सर। लाल मिट्टी नहीं थी, रेत थी, और तुम सर पे गिरे वहां, खून निकला तुम्हारा और तुम हुए बेहोश। अब मेरे को बताओ तुम क्या करोगे? सर ऑब्वियस सी बात है, गांव के सबसे पास में जो होगा रिसोर्स वहां पे जाऊंगा। और उसके बाद वहीं पे डिपेंडेंट रहोगे, या फिर तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, मलखाम के तुम्हारे दूसरे मित्रगण ये बोलेंगे, श्रीमान चलिए वाराणसी चलते हैं, वहाँ BHU को एम्स का दर्जा दिया गया है, वहाँ स्पेशलिस्ट लोग हैं, हमारे नन्हे मुन्ने ननिहाल की जान बच जाएगी। बोलते कि नहीं बोलते? सर अगर रिक्वायर्ड होगा तो हाँ। हाँ, तो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन अगर बोली गई है GPE में, तो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ सर। जब रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते हो तो GPE में क्यों नहीं करोगे? GPE तुम्हारी Okay, sir. day-to-day life है। It's your day-to-day life. This is what I told you. 99% of the questions of people who have raised the hands, they must be having some similar doubts like these. So whatever I have spoken right from the time I started, and now that we are finishing, we are ending the session, all your doubts would have been, or rather should have been, or rather must have been clarified by now. Yes sir. Yes sir. Okay. Okay. Thank you sir. Yeah, most welcome. All right. All right. So that's all with question answer, and we are done. No more questions. I think all the questions in the chat are similar to what already have been asked, and that has been taken by Ratan Khan and Nikhil. And thank you, Nikhil, for sparing your valuable time and spending with our future leaders, defense leaders, military leaders, and for developing them in a way by answering these questions. So we are coming up with together with Nikhil and Commander Lily and Major General Shukla, we are coming up with one nice mentorship program, which is, you can see in the chat also the details, which is one of its kind mentorship program. Initially, we give a lot of emphasis on personality development because a lot of you have this, shortcomings that schools and colleges are not able to bridge that gap in your personality, and that is of being an effective communicator, of developing your interpersonal skills, and so on and so forth. So it is going to start with that. A few of you have already registered for personality development, and a few have registered for our exclusive mentorship program, which all four of us are, as individual mentors, are going to work with you towards your SSB preparation, towards developing you as well-rounded individual. So payment gateway and everything is being shared. There's a WhatsApp chat link. You can just join that, and we can give you further details. Payment gateway for both the programs for 1 month long mentorship is also shared, as you can see in the chat, and for personality development is also shared. So we are among in this personality development, all those who have already registered, we are going to take 3 women candidates, and we are going to charge only 6,999. That's 7,000 in that. So that's the only thing that you will be charged for 1 month long mentorship, where all 4 of us will be sitting and working with you on your personality, and will help you crack the interview. So all the details are there. If there is any doubt, you can always get in touch with me on Insta link, and the WhatsApp chat is already there.
So you can always, through that WhatsApp chat also, you can ask any query and all that. So thank you. Thank you everyone for joining in. Thank you, Nikhil. If there is anything you want to say, one last message, one you know, closing message, I will say, not last message, closing message, you can just Okay, go ahead. I'll share one thing with all of you. मैंने कोई SSB का कोचिंग नहीं लिया था, but I was all India rank 1 in University Entry Scheme Army 20 and UES SSC GSX for 13th course of the Indian Naval Academy. I was all India rank 1 in both the SSBs. मैंने जाके अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ये बोला था कि मैं SSB देने इसलिए आया हूँ क्योंकि आप यहाँ पे बहुत अच्छा खाना देते हो और आने जाने का पैसा भी दोगे. ओके और जब मैं SSB देने गया था, I literally had no one to fall back on. I had lost everyone in my family and Forge was the last resort of getting placed. Although I was a NIT student, I'm an NITN, National Institute of Technology, Srinagar, JNK, the same college to which Funsuk Wangdu belongs to, Mr. Sonam Wangchuk. He is also ex-REC Srinagar, 3 idiots. Okay. So I literally had to step out in curfew and in Srinagar city, and I had to literally face, so many blockades and patharbaji in Srinagar just to post my form. And I was all India rank 1. And now I see it, I look back at my career in the Navy, I'm a GTO. So I'll tell you only one thing, which was told to be my mother. In my name, no, it's written. Historically, world leaders, हमारे देश के जो historically लोग, मतलब rather जो हमारे संस्कृति में, I'm not harping upon any Hinduism, religious fanaticism. They were known by their mother's name. है ना? कौन्तेय, कुंती पुत्र अर्जुन, है ना? गंगा पुत्र भीष्म. तो इसलिए मेरे नाम में भी मेरे मम्मी का नाम है, Nikhil Kumar Chandrakala. So Chandrakala is my mother's name. That one last tip that I'm going to give to all of you is that last sentence which my mother had spoken to me. सोना जितना जलता है उतना ज्यादा चमकता है. याद रखो उसको. The more that gold burns, the more it glitters. सोने को चमकाने के लिए उसको पहले जलाना पड़ता है. ओके तो इसका मिलिट्री लिंगो में ट्रांसलेशन ये है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर. तो वही चीज मेरे को मेरी माँ ने लगभग 17 साल पहले बोली थी. नाउ शी इज नो मोर. सो those were her words before I appeared for the SSB and I was all India rank 1. So you have to keep, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना अभी बहाना पड़ेगा. Okay, remember this. सोना जितना जलता है उतना ज्यादा चमकता है. Okay, signing off. Bye bye. Take care. See you on the other side. Thank Okay? you. Take care. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am, for conducting the session. Jane, sir. All right. Thank you so much, sir, everyone. and Thank you. for connecting Thank you for such a joining in. You useful session. may choose to leave one by one. If there is any question, you can ask me. Hello, Jahan ma'am. Yeah, Am I hi. audible? Yes, Jay. Ma'am, my question was related to PPDT picture perception, and since I was screened out during my naval SSB, and I felt that, ma'am, during picture perception, what we perceive is different, but what we deliver is very different, very small part of it. So how can we put our whole imagination in one speak? So, how can you? मैम एक्चुअली हम लोग अपने जब भी किसी पिक्चर को देखते हैं, परसीव करते हैं, तो उस मतलब हमारे ब्रेन में उसका एक अलग ही इमेज बनता है, बट जब हम लोग उसको
मतलब अपने थॉट्स को डिलीवर करते हैं या उसमें ग्रुप डिस्कशन में पार्ट लेते हैं, तो उसका पूरा ये पार्ट वो चेंज डिलीवर नहीं कर होगा पाते हैं। अगर आपने फोटो को पिक्चर को देखते ही आपने आपके दिमाग में परसेप्शन जो फर्स्ट परसेप्शन आता है, हो सकता है वो कई बार पॉजिटिव नहीं हो, तो आप अपने आप से अपने internal conversation, you can have internal conversation and you can ask yourself, is it the right perception? You can change your perception there and then, it's very much possible. So you can definitely do that, but it is a matter of having confidence or no confidence. When everyone else is sharing another story, then what happens is you end up changing your जो आपने परसीव किया है, जो आपने पहले उसमें लिखा है, मे बी यू एंड अप चेंजिंग इट, मे बी कहीं ना कहीं सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इशू है। सो वैसा ना करके अपने अगर आप देख लीजिए जहां तक जेल हो रहा है, ठीक है, आप अपनी स्टोरी नरेट करिए। अगर जेल नहीं भी हो रहा है बाकी लोगों से अपनी स्टोरी, तो अपनी स्टोरी पे कायम रहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंटली अपनी स्टोरी को बताइए। जितने लोग हैं उतना परसेप्शन होगा वहां पे, किसी का परसेप्शन सही और गलत नहीं होगा। गलत होगा जब आप ग्रॉसली नेगेटिव होंगे, जब आप यू आर ग्रॉसली नेगेटिव, आप कुछ एकदम एब्सर्ड सा बोलेंगे, तब वो गलत दिखेगा। लेकिन जितने लोग हैं उनकी परसेप्शन अलग हो सकती हैं, और आप अपने परसेप्शन जिस तरीके से परसीव किया है, ऑफ कोर्स वो मैच करना चाहिए फोटो के साथ, पिक्चर के साथ। आप उस तरीके से बोलेंगे तो you will not be negatively judged, you will definitely be screened in. So लेफ्टिनेंट कमांडर लिली ने ये क्लैरिफाई किया था, और अभी हमारा कल से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। लेफ्टिनेंट कमांडर लिली विल बी वर्किंग विद यू one-on-one if you join our mentorship, and she will tell you कैसे आपको करना है। ऑलरेडी उन्होंने 1 घंटे 1.5 घंटे सेशन दे चुका है इससे पहले, और इसके पहले मेजर जनरल शुक्ला ने भी लिया हुआ है सेशन, तो काफी डिटेल के साथ सभी ने बताने की कोशिश की है इन सब के बारे में। थैंक यू सो मच मैम। All right, thank you. All right, so any more questions? Good evening, ma'am. Hi, Rona. मैम मेरा एक और डाउट था मैम, लेकिन मैं सर से पूछ नहीं पाया था। तो मैम जैसे लाइक आई एम अ फ्रेशर नाउ एंड आई हैवंट टेकन एनी एसएसबी कोचिंग, एंड लाइक some of my friends say go for SSB coaching so that you will get molded up, and some say that your naturality and all goes when you go to an SSB coaching, like lot of thinking comes. So ma'am, I am in a kind of confusion that should I go or not. And ma'am, I'll tell you, I can't tell about other SSB mentorship. I have never been a part of any SSB mentorship when I was going for my SSB, I definitely mentored my sister who's now in Navy, serving officer, and she's a lieutenant commander, and so I did not have anyone. I'm a first generation officer, okay, and the thing is, but somewhere or the other my preparation always started, I always took a lead in everything I was doing, and intuitively or subconsciously I knew that somewhere or the other my attitude of taking initiative, my attitude of going there and volunteering for things will definitely help me in future, and I always did that. किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, किसी ने कुछ बताया नहीं, but I always did that. So but कई बार हम स्टडीज में हमारे ऊपर मार्क्स का इतना प्रेशर होता है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर में और बाकी कॉलेज और स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले पाते हैं। सो एनसीसी इज वन व्हिच एक्चुअली शेप्स यू अ लॉट। सो क्या होता है कि नहीं ले पाते हैं, और सिर्फ वो एकेडमिक के पीछे पढ़ के आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, और इन सब जगहों पे एकेडमिक्स में कोई ऐसा कोई सेशन नहीं होता है, कुछ कोर्स नहीं होता है कि आप अपने आप को इमोशनली कैसे अवेयर करें, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़े, सोशल अवेयरनेस कैसे बढ़े, और रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें, ये सारी चीजें जो हैं, सेल्फ रेगुलेशन कैसे करें, ठीक है, ये सारी चीजें जो है नहीं बताई जाती हैं। कैसे अपने थॉट्स को
एक्यूरेटली आप सामने वाले को रख सकें, इंटरपर्सनल स्किल्स मैनेज कर सकें, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लैक करते हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे करियर में, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो या कोई भी और करियर हो, यही हमारे प्रोग्रेस में बाधा लेकर आती है। तो हमने जो प्रोग्राम तैयार किया है उसमें पहले जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो स्टार्ट होने वाला है वो इसी पे बेस होगा, क्योंकि हम आधे कच्चे पक्के कैंडिडेट्स को नहीं लेना चाहते। एक फाउंडेशन हम रख देंगे, ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे चीज़ों की, और जो मैं कराने वाली हूँ, और उसके बाद फिर हमारे जो तीनों बाकी मेंटर्स हैं वो काम करेंगे इंडिविजुअली आपके ऊपर। इसी तरीके का सिमुलेशन देंगे जैसे वहाँ पे होता है। ऑब्वियसली ऑनलाइन होगा, बट काफ़ी इफेक्टिवली हम उसको देने की कोशिश करेंगे, और आपको इंडिविजुअल फीडबैक्स देंगे, सो दैट आप अपने एसएसबी में जाने से पहले आप अपने ऊपर काम करके जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ OLQs देख के और आप एसएसबी का कोई मेंटरशिप आप ज्वाइन कर लोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ट्रस्ट मी, वो बहुत डिफिकल्ट होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे, उन OLQs को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, एक कॉन्फिडेंस दे देगा। एंड इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कोई करके चला जाए ना, और बस कॉन्फिडेंट रहे और अपना 100% दे वहाँ पे, तो भी वो सिलेक्ट हो सकता है। सो दैट इज वन ये। लेकिन कंपटीशन बहुत है, और कुछ ना कुछ आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। कंपटीशन बहुत है, डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाती है। सो दैट्स व्हाई वी केम अप विद दिस, एंड इनिशियली आई टुक कुछ कैंडिडेट्स का SSB mentorship on my own self, but I thought it's not possible for me to do it on myself, because जो candidates है वो बहुत कम time लेकर आते हैं, और it's very difficult for me alone to give that much time and value all by myself in such a short span of time. And that is why we got together, and that is why this team has been formed. So because of the competition, I think you should if you're doubtful, you should go ahead and take SSB mentorship. And thank you so much, ma'am. Yes. Anybody else? Ronak, ma'am, I want to say something to Ronak. Yeah. Yes. Hi. Hi. You were asking about doubt na कि you have to join coaching or not. I will suggest yes. many of my friends join, but 15 दिन की कोचिंग से कुछ नहीं होता है मैम। वही ना कि लॉन्ग टर्म काम करना पड़ेगा, और उसके लिए मेंटरशिप जरूरी होती है। ओके गो फॉर द मेंटरशिप, कोई भी मेंटोर ढूंढो जो तुम्हें जेन्युइन बनाने के लिए। It means like rather than going for an SSB coaching for around 15 days, staying there, and rather than that, we should go for any mentorship. Yeah. Okay. तो वहाँ पे आप ग्रुप में, झुंड में जाओगे, I think so. Yes, ma'am. अगर if it was my sister in that scenario, if tomorrow it will be my daughter or son, I will hesitate. एक ग्रुप में, झुंड में जा रहे हो, कितना डेवलप करके आओगे अपने आप को? कितना मैम 15 दिन में क्या ही डेवलपमेंट हो जाएगा मैम? पूरी preconceived ideas they give like. So we are taking very less candidates, 10 in a batch, and पूरे महीने भर we are going to work with those candidates. Yeah. Okay. That's so. If you so desire, you can approach us, and we will take you for that which is starting from tomorrow. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Pleasure. All right. Anybody else? All right. So thank you, everyone. Thank you for joining. Enjoy your weekend. Enjoy your Saturday evening and whole of your Sunday. And do take the right decision. In case you have any doubt, do approach me on Insta, and I will answer your queries. And in case you want to join our mentorship, again, do connect with our team. The number was once flashed. So anything there, do approach. Bye-bye. Thank you, ma'am. Thank you, Disha. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, everyone. Jai Hind. Okay, ma'am. Take care. Bye-bye. Thank you, Priyanka. Thank you. Okay. Take care, ma'am.